Don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. The falling heart don't help me. I've been find my way back to you. I'm lost again. I don't want nothing to lose. So So hello, this is MGBGAMi और आज हम इसको करेंगे कंटिन्यू, जो कि कल हम नहीं कर पाए थे। देखते हैं आगे हम इसको कितना और एंड मेक श्योर कि आज हम मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर सके इसको। आई मीन कितना होगा वो नहीं पता, बट लेट्स सी। ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहेंगे इस गेम को। बंद हो जा भाई तू भी। एंड इसकी ज़रूरत तो नहीं लग रही है, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट इट। एंड यस, हमने कल इसको इन द सेंस एक दिन पहले हमने इसको हाँ यहाँ पे ये जगह फाइट पे छोड़ा था। हेलो फाल्गुन भाई, क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है? की हाल चाल सर? सब बढ़िया? कैसन बात? कुछ रीचेबल आज, क्या बात, क्या बात है? भाई फर्क तो पड़ता है। I mean, what is this complex even for? The Pavlov complex is the origin of all of Facility 3826's biological innovations. Unique experiments are conducted here, involving everything from breeding new species of farm animals to developing new space exploration technology. Outer space.
You mean they make moon rovers here, not in Chalamet? Space exploration is about more than just vehicles. Oh, A spaceship and rovers will of course be required. But what then? What about after humans reach the Red Planet? You mean they breed animals from Mars here? Among other things, yes. In addition to breeding new species of animals suitable for Martian conditions, Okay. Soviet science is looking for ways to bolster man's ability to exist on Mars. So what, they're gonna give us gills so we can swim in gas oceans? Gas oceans are on Jupiter, Major. Mars features low temperatures and lethal hurricanes. Oh. But you're basically correct. The capabilities of your species have yet to be fully studied. So the latest medical breakthroughs, new life support systems, all came from here. Indeed, Comrade Major. So many geniuses worked here for the good of all mankind. बात करना Now हो they're गया? gone. हो गया बात करके? हो गया? मैं बात करूं? इतने देर से बात कर रहा, मैं बात करूं? होगा। आज मजा आएगा क्योंकि आज है च्युइंगम। और तुमको कैसा पता भाई मैं च्युइंगम? ठीक है भाई? आओ ये लगा दीज। यू नो व्हाट, मैं इसको ये वाला लगा देता है एंड इसको यह वाला। अब बंदे आएंगे यहाँ पे। अबे ये क्या हो गया? मेरी भाई का भरोसा। कुछ ज्यादा बंदे नहीं आ गए हो? मैं तो बस एक चीज करने जा रहा था, वो नहीं करने दे रहे लोग। इतने बंदे भाई अंदर, मजाक चल रहा है क्या? मैं कुछ ज्यादा बंदे नहीं थे। हेलो, हमारा साउंड आ रहा है? अच्छा आ रहा है। लाइक मारो सर जिसने लाइक नहीं किया। बाकी तक कोई जरूरत ही नहीं, बाकी कोई इशू ही नहीं हमको।
ज़ॉम्बी वॉर तो अवार्ड वही लग रहा है मेरे को भी। चलो ये हो नहीं सकता। अब फंस गया, उधर गया। You're fucked. I'm gonna rip your heart out. भाई साहब भगवान, तू आएगा और खोपड़ी खोल दूंगा मैं भाई साहब भगवान। कॉल करेंगे अब। अब क्या
ये डन। मेरे को ऐसे रखना है इसको। अबे तेरी भाई का भरोसा, पीछे क्यों नहीं आ रही है? ओह ओके, हो गया। हो गया। अरे यहाँ पे बहुत कुछ लूटना रह गया अब। अभी इसके लिए अभी ये चाहिए, कोड चाहिए। देखो व्हाट आई विल डू नाउ इज, ऊपर जाऊंगा एंड क्या करूंगा, सेव करके आऊंगा बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया फाइटिंग यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेव करना बनता है। थैंक यू। एमओ वैसे भी नहीं मिल रहा। ओ भाई ये क्या हो गया? कौन सा चिंगम खा रहे हो? जो कि उसको पसंद था। आई मीन ये वाला नाम क्या उसका? ये फिर से आ गए। हेलो अबे ये चीटिंग ना करो भाई। यार इसके लिए कोड ढूंढना है मेरे को। देखो ये अंदर वाले के लिए कोड ढूंढना है। यार मेरे को मेंटोस वाला दिमाग की बत्ती जला दे। तेरा भाई स्ले। हाँ भाई कल भूल भी गए।
अरे तेरे भाई का भरोसा। ज्यादा हाइपर हो रही है मैडम। That's how you kill, my friend. When you don't have ammo, वो आई थिंक खत्म हो गया। ओ भाई 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 भाई, अरे म्यूजिक बंद कर दे, हो गया। थैंक यू। ओ भाई ये मैडम भी उठने वाली थी, थैंक गॉड बच गया। ओ भाई 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 एमो ही मिल गया। ओके, यहाँ पे और क्या बचा है? नाइस वन। यहाँ पे और लूटने के लिए क्या बचा हुआ है? तो ये एरिया मैंने क्लियर कर चुका हूँ, बाकी का ऊपर का एरिया क्लियर करना बाकी है। यार मेरे को उसका कोड नहीं मिला, लेकिन वो कोड कहाँ होगा? What do you think, sir? व्हाट, ये क्यों चमक रहा है? व्हाट द हैक, ये नीचे फिर बन गया। यार मेरे को इसके अंदर का कोड चाहिए। अगर ये कोड मिल गया तो मैं ये ओपन कर पाएगा, बट आई डोंट हैव एनी कोड यार। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। कहाँ पे? Give me some code. हिल मत भूतनी के, डर लगता है।
देख रहे हो मेरे नीचे पूरा क्लियर किया था फिर भी अभी फिर दिख रहा है। डेटा डिलीटेड, यहाँ पे भी नहीं है। और मे भी ऊपर रहेगा। एरिया तो क्लियर हो चुका है अपना, कोई इश्यू नहीं है। ओके उठाना भाई, थैंक यू। ओ भाई ये क्या यार, कोड दे दे भाई। प्लीज गिव मी सम कोड। यहाँ पे तो नहीं मिलना चाहिए यार। देखो ये लूटना बहुत जरूरी होता है, अगर मैं लूटेगा नहीं ना मैं अपग्रेड नहीं कर पाएगा। सी ये मेटल पार्ट उठा, ऑप्शन तो आएगा तो उठाऊं ना इसको मैं। थैंक गॉड। अबे भाई सी अगर अभी कोई आया हो तो मैं क्या कर रहा हूँ राइट नाउ। यहाँ पर ज़ॉम्बी होड़ आ गया था, मैंने मार दिया सबको। राइट नाउ मेरे को ये ओपन करना है और इसका ये कोड चाहिए मेरे को। वो कोड नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा कहाँ पे है करके। अगर तुमको कहाँ पे भी ऐसे पेपर दिख रहा है ना नीचे गिरा हुआ, बताना अगर कोई देख रहा होगा तो। और लाइक करते जाओ सर। अरे भाई 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 ये डोर भी खोल दो यार। यार यहाँ पे भी नहीं मिला भाई। यहाँ पे भी नहीं है।
यहाँ पे भी नहीं है। भाई क्या है भाई, इतने सारे फोटोज वोटो देखो ना। और मैं भी यहाँ पे होगा। यार वो ऐसा पेपर है ना कि तुमको दिखेगा। नहीं यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं है। नहीं, nothing's here. वो एक बंदा नीचे घूम रहा है भूतनी का। ना मैं पूरा चेक कर लिया यार, मिला ही नहीं। डेटा डिलीटेड प्रोटोकॉल होगा। मैं भी यहाँ पे नहीं। Saving data. एक चैनल है जो 2 साल से इनएक्टिव था, वीडियो डाली ही नहीं, आज एक्टिव हुआ। कल वीडियो हैं। एक चैनल है जो 2 साल से इनएक्टिव था, वीडियो डाली ही नहीं, आज एक्टिव हुआ है, कल वीडियो डालेगा। ऐसी बात है क्या? डालो डालो डालो। उसकी वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी मजेदार है। ये तो है, ये तो होता है। बट इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कोड दे दे बाबा। यार अंदर लूट ही लूट रखा हुआ है। अबे मिल ही नहीं रहा यार, बहुत लूट है अंदर, बहुत ज्यादा लूट है। तुमको कहा कुछ दिख रहा है क्या? मेरे को इसका पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है यार, मिल नहीं रहा है।
It's impossible to find this kind of pattern. और मे भी मेरे को मिल गया लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है। छोड़ो भाई, मैं आगे निकल रहा है। Saving data. अबे यार, इतना बढ़िया चल रहा है भाई। Authorization. Major Nechayev. Nice one. Just रिकॉइल का तो एर्गोनॉमिक्स, उससे क्या होगा? इंक्रीज एम स्पीड, रिड्यूस कार्ट्रिजेस। मैगजीन मिल नहीं रहा है इसमें। बड़ा बड़ा क्यों, और क्या बढ़ा दूं भाई? बस हो गया भाई तेरा, और अपग्रेड नहीं कर सकता तेरे को। मे बी आई कैन अपग्रेड दिस वन बट आई डोंट थिंक सो मेरे को कुछ मिला है। एटीन चाहिए, 18। मेरे पास 14 पड़ा है। भाई 202 का क्या अचार डालूं मैं? So, what will it be made? एबिलिटी अपडेट करना। चलो खाने। अरे आओ तो। एनर्जी मैनेजमेंट, ओके। $184 चाहिए इसका। इंक्रीज योर मैक्स हेल्थ, ये भी करना। दोस्त जर्मनी से आया तो लेके आया। नाइस वन। जर्मनी वाला 10 चॉकलेट। What will it be, Major? दोस्ती है ना, समझ रहा हूँ। नहीं क्या है? इसमें मेरे को ज्यादा कोई अपडेट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है बट सेविंग डेटा तो कर लेगा बट हमको कंज्यूमेबल्स में भी देखना है जाके। और ये इतना 31 ठीक है, इससे ज्यादा वैसे भी कैरी नहीं कर रहा हूँ मैं। Access granted. देखो अपग्रेड में मैं ये अपग्रेड नहीं कर पा रहा, वैसे भी ये भी नहीं हो रहा, इसको तो मिला ही नहीं है। बट ये गन काम का एक्चुअल में अगर बोलने जाऊँ तो। और स्टोरेज में क्या क्या पड़ा हुआ राइट ना, मेरे पास ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एमओ का दिक्कत होना स्टार्ट होगा मे बी।
ओ भाई मेरा बैग फुल है होगा। ओके भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मेरे पास मिल गया चीजें। इसको बैग में रख, इसको इसमें रख और इसको निकाल फिर से बाहर। ये 3 राउंड ठीक है रखा हुआ है मैंने। इतना हेल्थ का जरूरत राइट ना मेरे को नहीं लग रहा है। इसको अंदर रख, इसको ये ले लें एंड इसको भी ले लें। बाकी का ये तो चीज़ें ओके, ये 2 चाहिए। अरे एक दोस्त जर्मनी से आया तो मैंने उसको बोला कि मेरे लिए कॉइन्स लेके आना, तो वो वहाँ से लेके आ गया, पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका लैंग्वेज खोल, उसका लगेज लिखना था क्या, लगेज खोल कर चेक करवाना पड़ा। नहीं चेक करवा दे, लेकिन देखो एक सफिशिएंट अमाउंट अपने देश से बाहर लेके जा सकते, जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता, बट अराउंड एक लिमिट होता है। डोमेस्टिक में अराउंड 50,000 होता है, तुम कैश इन हैंड लेके जा सकते हो, मतलब इतना 50,000 पर बंदे के हिसाब से ऐसे 25 या 50,000 लेके जा सकते हो, समझ रहे हो? वैसे वो लेके जा सकते हो। वह अलाउड होता है यार थोड़ा बहुत कैश लेके जाने का। अगर वो लिमिट के बाहर लेके जा रहा है तो जितना लिमिट के बाहर लेके वो हम लोग काइंड ऑफ सीज करते हैं, और बाकी का या मे बी उससे ज़्यादा लेके आ रहे हो तो तुमको रिटर्न कुछ तो ऐसा चाहिए होता है। मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता, लेकिन ऐसे चलता है। ज्वेलरी का भी वैसे ही, अगर तुम कहाँ से ज्वेलरी लेके आ रहे हो उसका तुम्हारे पास रिसिप्ट या कुछ होना चाहिए, तो अलाउड है ऐसे। और एक लिमिट तक एक बंदे के साथ अलाउड होता है लेके आने के लिए। पर मेटल डिटेक्ट में आ गया इसके लिए भाई। नहीं भाई अलाउड होता है रे, नहीं भाई मेरे को भी नहीं पता। अगर वो 2 कंट्री का रूल कॉन्ट्रडिक्ट करता होगा तो फिर वो उसके हाथ में, फिर वापस कर दिया चेक करके। अरे सूर्य पूरा लिखना फिर मजाक चल रहा है क्या भाई? ये नेट क्या काम आता है? कंज्यूमेबल्स में आता है कहीं? ओ यस कंज्यूमेबल आ रहा है, वही तो मजा है ना। वाह अच्छा तो नेट काम का है। यार वैसे ही मैंने ज्यादा इलेक्ट्रो यूज नहीं किया है। पूछो पूछो, अरे पूछो तो जाने सर। इतने मेरा वैसे भी काम हो जाएगा। सेविंग डेटा। अब हमको एक चीज ये करना है कि इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें आग वाला लगा। लेट्स गो, सब में लगा दूंगा मैं भाई साहब भगवान। टेक ऑफ। तुमने कभी च्युइंगम गलती से कर निकल गया क्या? नहीं, अगर हो भी गया तो फिर उसके लिए फिर ये खाओ। लेमन वेमन कुछ होता है वो खाना होता है। भाई ये तो आ ही गया।
थैंक गॉड। ग्लिच हो गया क्या? नहीं कहा, ग्लिच नहीं हुआ। Tell me, Comrade Major, based on your professional and personal experience, would our civilian robots in combat mode really be able to complete the Atomic Heart project? Yeah, they अच्छा could do. नहीं, आई डोंट थिंक उन लोग कर पाएंगे। There were plenty of bots at all the military bases, and nobody expected them to attack. They could take the American military by surprise, just like they did to the soldiers here. What a shame. The world just recovered from a war, and now there will be another. Well, it's not really so bad if you think about it. What do you mean, Comrade Major? If Comrade Sechenov and the Politburo want to take over the U.S. and even the whole world, they won't fight regular people. But civilians do perish during combat operations. You know all about that. If the robots are programmed not to kill civilians, they won't attack civilians. You're a robot, Charles. You should know all about that. I'm a robot? In a sense, I suppose you're right. A robotic glove. What? Neuropolymer gloves won't take orders from Collective? It depends on the glove. Some will, and some will only be able to obey their carriers. I digress. Civilian robots will receive the order to activate combat mode from Collective, and whoever sets Collective's policies will easily be able to order them to kill anyone at all, including civilians. Why would they kill civvies? They're regular workers, farmers, scientists. Shit. So that's what they want the rings for. And what's that? You can take your thought device off and disconnect from Collective, but a bot can't, can it? That means your own robot housekeeper will drag your ass back into Collective at the drop of a hat. They want the rings to put on their own robots, so they'll only listen to them. Correct. यस, सही पकड़े सर। एकदम सही पकड़े। आराम से मारो भाई, जल्दबाजी मत करो। ऐसे मार के हो रहा है तो क्यों? ओ हो, ब्लूप्रिंट मिला, क्या बात है। हैंडल का ब्लूप्रिंट मिला। और कुछ बचा यहाँ पे लूटने के लिए? कुछ नहीं भाई, चीजें बहुत मिलती है इसमें, बट जो हिसाब से खत्म भी हो जाते हैं ना। देखो मैं ये डोर को तो खोल दूं, मेरे को क्यों लगा है। और भाई देख रहे हो कितने बंदे हैं। मेरी तो लगने वाली है। ओ भाई ये क्या? मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मेरी लगने वाली है। इजी है। वो देखो भाई, अबे इन लोग उठने वाला है यार। 3 बंदे वैसे यहाँ पे भी है भूतनी का। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं?
भाई मेरे को तो लग रहा है डर। क्या लग रहा है? डर। ये अंदर से उठेगा भूतनी का, ये भी उठ सकता है। बस भाई मेरे को एक्टिव नहीं करवाना है किसी को। भाई ये उठेगा वो उठेगा भाई, वो दो बंदे ऊपर। अबे इसके लिए की चाहिए। लग गए भाई, की रखी है यहाँ पे। लग गई मेरी, लग गई। ये उठेगा भूतने का, वो उठेगा, एक्टिव हो जाएगा तुम लोग। ये उठेगा तो मेरी तो लग जाएगी। Oh shit. What's capable of this kind of brutality? This poor lady. You are expressing sympathy for a corpse, Major. It's a woman's mutilated body. You had sympathy for people just a little while ago. This person is dead, Comrade Major. Make sure your weakness for women doesn't come back to bite your ass later. Something's definitely wrong with you, Charles. I'm gonna ask Sechenov to calibrate you. अबे घुमा ना जल्दी। बच गया। A complaint. Listen, I am Fine. अरे We'll deal शांत with बैठ। it. क्या करूँ, उन लोग इतना एक्टिव नहीं हुए। बच गया भाई। ये आता है सेविंग का ऑप्शन। अरे सेविंग का है ना, फाइट करते हैं ना थोड़ा, रुको ना। डरते हैं क्या? फाइट करेंगे थोड़ा, रुको। सेव तो कर दिया वैसे। क्या रे भूत नहीं क्या? तू आ। You're one sick motherfucker. अरे इसको मारने को तो मेरे को पता है। इसको तो घुमा घुमा के मारेगा भूत ने। हील मारेगा, हील मारेगा, हील मारेगा। तू हील मारेगा भूलेगा। अब मारना ही।
मेरे को भी मार रहे थे हिल, वो अकेला नहीं मार सकता भाई। चल बेटे, अबे छोड़। लाइन से खड़ा रहो, सबको मौका मिलेगा। सबको बराबर का मौका मिलेगा। और कोई? इजी। और कोई? इतना फाइट के इतना सेव कर लेता था। That's it, you're fucked. ओ भाई साहब, सॉरी ब्रो। यार मेरे को यहाँ पे लूट अच्छा मिलेगा, इसके लिए लूट रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तू ऐसे ही अंदर रहे भाई, बाहर ना आना। हैंग बाहर नहीं आ रहा। ये डोर क्यों नहीं खुल रहा? तू कहां से है ब्रो? बस इतना ही था यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं था। ये डोर नहीं खुल सकता। कैसा चल रहा है ब्रो? सब कुछ बढ़िया? और
अबे मेरे को लगा बहुत कुछ मारने मिलेगा। बच गया, बच गया, बच गया। दैट वॉज इजी ब्रो। मेरे को लगा थोड़ा हार्ड होगा बट ठीक है भाई। बट आए जाने से what पहले will it be, हमको Major? ग्लव को थोड़ा अपग्रेड कर लेते, क्या बोलते हो? 207 और लेट्स गो मैक्स इंक्रीज हेल्थ। सी इसके लिए सब चीजें कर रहा था मैं। और 42 में क्या अपग्रेड भाई, ये तो फुल्ली अपग्रेड मार दी मैंने, बढ़िया। और क्या हो सकता है? चलो इसके बाद हमको ये इंक्रीज करना है बस। जब तेरा भाई अपग्रेड मारता ना, Please select the desired procedure. ट्यून अप करना है भाई थोड़ा बहुत। ट्यून अप नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अभी और भाई कितने नेट्स मिले भाई, कितने कितने। एक तो मैंने लगा के रखा है इसमें, लेके घूमता हूँ बट कोई फायदा नहीं हो रहा है वैसे इसका। बट हमको फायदा देगा ये चीजों में रख के। कोई बात नहीं, एमओ तो वैसे भी है हमारे पास, ज्यादा जरूरत तो बस इसको अंदर रख दो। और बाकी का एक्स्ट्रा जो एमओ चाहिए था हमको ये वाला, चल ओके कैरी तो कर ली। यार ये हेल्थ बहुत मैं ज्यादा कैरी कर रहा हूँ। और ये एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है। इसमें अब मैं एक ये कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी जरूरत लगे मैं लगा लूंगा इसको। बाकी का आई एम ओके विद दिस, बट इसका एमओ भी कैरी करना चाहिए राइट ना, मेरे को फील हो रहा है। बिकॉज जो हिसाब से मैं इसका एमओ यूज कर रहा हूँ, यूज तो हो रहा है। इसको निकाल, इसको रख। ये निकालो। देखो जाने से पहले फुल करके जाऊंगा जो भी चीजें हैं। 4 2 और 1 2 3, बाकी का एक ये कैरी कर लेता हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना पड़े हमको। चलिए दैट्स ओके, ये भी ठीक है। राइट ना हम मैं इसको निकाल के रख लेता हूँ। चलिए आगे निकलते हैं सर, हमको जाना था नीचे। अरे सेव नहीं मारा। लेट्स गो। नाइस। चलना भाई जल्दी है।
ओ भाई, ओ भाई, समझ गया समझ गया। थैंक गॉड। यहाँ से एग्जिट मारना है फटाक से। तू कहाँ से? अरे तेरे को मैंने बोला ऊपर। तो ये तो बाहर से लॉक्ड है, तो कर ना, कर तो रहा हूँ। ओबे तेरी भाई का भरोसा। गिर गया। एग्जिट मार रहा है और क्या करना है। अरे तेरी भाई, मर जाएगा भाई। Filthy animal! छोड़ना। अब आग लगा लगा के मार दूंगा मैं भाई साहब, भगवान। उबे छोड़ 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 छोड़।
सबको मार के जाएगा तेरा भाई। ओ भाई ओके नेटवर्क ब्रो, नेटवर्क कहाँ है नेटवर्क? लग गया। बोलो आओ। इसको रख दो यहाँ पे, इसको लगाओ। खत्म हुआ। हाँ ऊपर जाके फाइट करना ही आए हैं। Freaking critters. What's this place, Charles? A morgue? Indeed. The bodies of the dead are kept here for further study. What do you mean, the dead? There are bodies all over the place. Where did these come from? There are dozens of them, and most of them are young. These are the bodies of volunteers who died in dangerous human experiments. Holy fuck. I mean, I get that there are certain experiments that can't be performed on mice or pigs or whatever, so they need living people, but so many. This is completely fucked up. Unfortunately, things don't always go smoothly in science. Sometimes volunteers die. The sub-basement exists so that their deaths will not be in vain. Their bodies are studied to prevent this from happening again. Screw your sometimes. Couldn't they just use the condemned on death row for this? But even that's... Not all experiments can be performed on the dregs of society. Some important and secret projects require psychologically healthy volunteers. And sometimes, these experiments can have tragic outcomes. What could be more tragic? Believe me, Comrade Major, there are things that are far worse than what you see here. Sometimes the deaths of volunteers can lead to a breakthrough that saves millions of lives. This was how the vaccine against the brown plague was developed. Let's keep going. This has to end. Now.
माय गॉड, हमने तो क्लियर ही कर दिया। लेट्स गो। और ऊपर जाना है। बैम। ओके, ये तो हो गया। ओके, oh, नहीं रे, नहीं नहीं नहीं। अरे यार, डन। Hey, young man, wait. I've got better things to do. Saving data. यार ये साइड ढूंढना रहेगा मैं। ओह, हो गया। ओ पूरा घूम के हम लोग। ओके ओके ओके, गॉटचा। Saving data. अभी किसमें मेरे पास एमो कम है? लेट्स से इसमें कम है, इसमें नहीं। यार ठीक है भाई, जरूरत नहीं लग रहा है मेरे को फिलहाल।
Nice. Oh, bye. Okay. That is like I'll take it. Okay. This is fucked. Sechenov is a decent guy. How could he let this happen? An army of bots, killer mutants, thousands of innocent victims. No matter how you slice it, the facility's to blame. Even without Petrov, this place has issues, to say nothing of Collector 2.0. Seriously, I gotta wrap this up and retire. Maybe even get married. What? Nah, fuck that. Your negative brain activity is generating unpleasant artifacts in my code. I told you to stay out of my head, Charles. Get to work. Set me a fucking waypoint, damn it. Tin God! How do you like that, gearhead? Who's the man?
ओ भाई क्या ही आ रहे भाई इन लोग। यहाँ पे लूटना जरूरी है। Help! Help! I've got bad news for you, comrade. Don't talk nonsense. Can't you see I'm bleeding out? This complex is full of medical... यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं है होगा। यह एरिया हम देख चुके हैं, जाना है वहाँ। यहाँ पे कुछ था ना। बाकी का आई एम डन यार, चलो निकलते हैं। ओके ये लग रहा है, ये भी लग रहा है। हमको सिर्फ लगाना है इसको। ओके गॉट इट। हमें इसको बार बार पीछे चल होगा। ये इजी था बाय द वे, ये वाला। डन। ये लॉक सिस्टम अच्छा है बट बड़ा रिपीटेटिव होता है तो कुछ देर बाद। भाई एमो नहीं बचा है मेरे पास। भाई क्या है ये? अभी क्या है ये? तेरी Look at the size of that fucking thing. What is it? The experiments here involve the creation of neuropolymer endoskeletons for ये various तो डॉगी लग animals. रहा है। The goal is to allow them to live in hostile conditions on the outer planets of the solar system.
अच्छा भाई, Endoskeletons. That thing isn't gonna attack us, is it? It's huge. The specimens here currently lack any neuropolymer brain ये tissue तो वो structure. है पिग, They are nothing but polymer bodies at this time. ये They बियर। cannot move. Still, they're freaking massive. Are they for planets with low gravity? Some are, while others are for planets with high gravity. ये क्या है? Research is being conducted. So this thing is supposed to live on Jupiter. One day, we certainly hope to create a life form that will be capable of it. What's this thing? A jellyfish? The species represents a complex symbiosis between a jellyfish and ये a तो डियर coral लग रहा है। polyp. It has no clearly defined external shape, but it is assumed that the organism will configure its body independently based on its environment. We can achieve so much by putting science first. Maybe Dr. Sechenov is right. People will be better off in collective than shooting holes in each other over some national border or something. Are you sure about that, Comrade Major? ये क्या About है? shooting? Absolutely. भाई मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, सच्ची बताओ तो। Saving data. Access Oh. granted. भाई साहब, ओ हो, बहुत मिला है, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है। क्या ये क्यों नहीं अपग्रेड कर पा रहा मैं? अब क्या 87 में वैसे क्या ही हो जाएगा अभी, ये हो रहा है। कैरेक्टर का वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, ये नहीं चाहिए पार्कोर वाला। एनर्जी मैनेजमेंट में ये कर लेंगे, बट हमको इससे ज्यादा ये चाहिए, इंक्रीज एनर्जी रीजनरेशन रेट। हमको ये चीज की जरूरत है, बाकी तो नहीं चाहिए। Reselect the desired अरे authorization. एबिलिटी में क्या क्या बचा अभी? एबिलिटी का हो गया हमारा भाई, जब वैसे भी। We had to take Bikov out. The damn janitor started shooting up the lab. It's a good thing the corrections team got there in time. He left a whole bunch of safes in there. और बाकी का ये ले लेता है। Whose music box is this? बाकी इसमें हमको जो चाहिए वो ये है 4। चलो 4 हो गए। और क्या मैं अपग्रेड और क्या कर सकता हूँ इसमें, और जो क्या चीजें हैं जो मैं ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये मेरे हाथ में होता ना मैं कर देता कुछ तो इसमें, बट नहीं। अरे सर चल रहा था लैपटॉप, बट लैपटॉप क्रैश मार दिस। अबे पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने सेव तो मारा था बट अभी ऑब्वियस। लैपटॉप बिलाक रहम कर। तो मुझे ये ऑन करके नहीं रखना है, समझ रहा हो। इसको भी ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, जितना हो सके उतना।
नेक्स्ट टाइम साफ करके लाना पड़ेगा। आई मीन नेक्स्ट स्ट्रीम कल ही कर लेगा इसको। लैपटॉप को साफ करने का टाइम आ गया सर। धूल बैठ चुका है लैपटॉप में। थैंक गॉड ये क्लाउड पे से होता है, इसमें सारा चीजें सिंकिंग का नाटक होता है। हाँ भाई तू लोड हो ले, कैचे वैचे मार ले भाई तू। रेंडर मार रहा है भाई ये, 1 मिनट रेंडर हो। हो गया रेंडर, अभी करूँ? लैपटॉप भी लाइक जान लेके ही मानेगा ये गामी। इसको ऑफ करते हैं। स्टार्टअप में अभी क्या क्या चल रहा है? और कुछ नहीं चल रहा। बैकग्राउंड ऑफ है ना? ओके ऑफ है। हाँ भाई काश यार ये सेम स्पेक्स का अगर मेरे पास पीसी भी होता ना भाई, बहुत फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। ये स्पेक्स का भी मैं प्रॉपर 60 FPS भी खेल पाता आराम से। ऊपर से मैं ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करता, आराम से 70-80 FPS निकालता लैपटॉप पीसी पे। कैबिनेट होता भी सिर्फ ये स्पेक्स का भी भाई मेरा काम हो जाता। आई होप ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखेंगे मैं। भाई इन लोग ने देख रहे हो विंडो में, देखो क्या करके रखा है, नकली दुनिया दिखाया है। देखो पेपर पेंटिंग जैसा है बाहर। लॉल सिर्फ ये असली है, वो पीछे का नकली है बाहर। अच्छा मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। ओ भाई
अरे हाँ, उसका सिर लेके आ रहा है ना मैं। ओ भाई अपने गार्ड के साथ खड़ा ही है यार। लेकिन पता है इसको काइंड ऑफ चीजें ना पता है क्या चल रही है एक्चुअल में अभी। तो तुमको दिख नहीं रहा होगा ना। इसको ना काफी सारी चीजें पता है अभी। मतलब इसका एक्चुअल में दिमाग क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ये इसके गार्ड है। भाई इसका सिर लेके आ रहे भूत नीचे। भाई सेम उसके जैसा खड़े उन लोग। क्यों भाई? भाई कितना क्रीपी लग रहा है चीजें। I never expected to see Victor like this in these circumstances. ओ भाई इसको वैसे ही हो रहा है फील। We used to be thick as thieves, you know. Dizziness. But Victor made too many bad calls. Now look at him. क्या करेंगे इससे इसको? Thanks to Dr. Sechenov's brilliance. ये We कौन आ रही don't है have भाग to के? lose all of Petrov's knowledge. यह कौन है? ये मैडम कौन है? और ये स्टार्टिंग में आई थिंक मिली थी हमको, वो है। We'll be able to return the robots to their previous state once the simulation He's already procedure is dead, you complete. creep! Keep your hands off him! Grenade! What? भाई मतलब जिससे हम लोग बात करें वो पहले मर चुका है। वो हम लोग काइंड ऑफ उससे क्लोन से बात कर रहे थे। ओ भाई जो ये ब्लड जैसे पानी से बना है। ओ भाई यार ये फिर इल्यूजन में चला गया। तो वो दो इसके गार्ड काइंड ऑफ एआई वाले थे जो एडवांस वाले थे, वो कौन सा भी शेप वेप ले सकते हैं। तो उसने उनको मारा भाई पता नहीं। Establishing connection. The professor says you haven't slept in 3 days. I don't wanna. Sleeping pills, bottle of vodka. Why not both at the same time, huh? You know I don't like that stuff. My brain's a fortress. You know, when I was a boy, my brother was scared of the dark, so my mother left him. ओ भाई It helped him. I hated it. The light interfered with my imagination. I didn't like children's books for the same reason. All those colorful pictures. Exactly. The books in my father's library were interesting. History. Theoretical physics. Science doesn't try to make the world safer or prettier. It doesn't lie to us. It just gives us the facts. So, I knew what I had to train for. And I made another discovery. A monster in the dark behaves predictably. It can be studied. A monster in the light wears a mask. It is therefore unpredictable. Which makes it dangerous. Very much so. Moreover, the light is what makes us monsters. Do you understand, my boy? May I turn out the light?
ओ भाई Reconstructing illumination. क्या कितना बड़ा बबल है ये। ओए, घूम गया भाई। अपसाइड डाउन है घर अब। ओ भाई साहब, अबे हम कौन है? Where are you, my love? आप है। Come to me. आ रहा हो, आ रहा हो। आ रहे हैं। काहे परेशान हो रहे हो मैडम? अच्छा, ये साइड से तो हम गए थे। देखो, गेम का ऑब्जेक्टिव मेरे को पता है क्या चल रहा है, लेकिन गेम बग हो गया। क्यों पता है मेरे को? कैसे पता चला बताओ? ये देखो, ऊपर लिखा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जो काफ़ी हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, एपिलॉग उसमें था। गो टू दिस ट्रेन प्लेटफॉर्म बोल रहा है वो। बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। हाँ, गो अप टू दी ट्रेन प्लेटफॉर्म बोल रहा है, वहाँ नहीं जाना है। गेम हो गया मेरा बग, लेकिन मेरे को पता कहाँ जाना है अभी। ये फिक्स हो जाएगा, मैं आगे आगे जैसे जैसे जाएगा फिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ऑब्जेक्टिव बग है ये। अरे ऊपर ऊपर जाना है। अब यहाँ से नहीं जा सकता मैं। ये रहा। अरे पकड़ा नहीं उसने। हेलो, भाई गेमर हूँ ब्रो, बचपन से। जो चीजें तुम चौथे में करते तो हम करके छोड़ चुके हैं। ऊपर जाना होगा। ये गलती से यहाँ चला गया मैं, वहां नहीं जाना और ऊपर जाना। गेम भी लग हमको क्यों मनाएगा। हट ओ, जंप एंड डैश करना है। चलो आगे ऊपर। माय लव, अरे उठते हैं मैडम। उठ गया। लो, इससे अच्छा इल्यूजन ना, सबसे अच्छा इल्यूजन ये वाला जो पार्ट है ना, इल्यूजन वाला सबसे अच्छा पार्ट तुमको देखना है ना, फार क्राई में देखना। ओ भाई, उन लोग बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं। What the? Charles, where's Larissa? She hid before the explosion. So what happened to Stuck? Stockhausen was knocked into a vat of polymer by the explosion and is now deceased. You hypocrite. I'm a doctor. I'm a doctor. Huh. Some doctor you are, you grenade-tossing bitch. Petrov and Filatova are cut from the same cloth. There can be no doubt about that. Whatever. We gotta find a way out. Okay. देखो ये बग हो गया, देख रहे हो भाई। मे बी सेविंग हेल्प करेगा इसको अगर मैं लोड करूँ तो। आगे जाके गेम पूरा बगना कर दे भाई।
मेरे सेव्ड फाइल मेरे को उड़ाना पड़ेगा फिर। अभी समझा गेम में मैनुअल सेव क्यों दे के रखा है। गेम का सेव्ड फाइल इन लोग ने ऑप्टिमाइज करके नहीं रखा है। अभी वही दिखा रहा है। ट्रेन स्टेशन क्यों बोल रहा है? यहाँ पे घंटा काहे का ट्रेन स्टेशन है? कहाँ है ट्रेन स्टेशन? कुछ भी। हम क्या आग बंद करके गेम खेल रही है? हमको पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है। अबे फिर Same cloth. There can be no doubt about that. Whatever. We gotta find a way out. अबे ठीक है भाई, छोड़ो, हो गया तो हो गया। अरे भाई आंखें मेरी। Major, you alive? No, I got killed by a grenade. I'm so sorry that happened. I didn't want any of this, but none of it matters right now. So what does matter, you crispy-ass critter? We have to meet. You need to see this with your own eyes. I'll show you everything. भाई मेरी आंखें। You trust Sechenov too much, but he's keeping you in the dark. You have no idea what's really going on. You need to see it with your own eyes or you're not gonna believe it. अबे मेरी आंखें I दर्द have कर no रही है। fucking idea what's going on. You will understand when you see it. I have proof. अरे प्रूफ वाले रुक जा मेरी माँ। मेरी I'll be आंखें waiting in दर्द the कर रही Academy है। of Consequences. The entrance is inside the lighthouse. Trust nobody. I don't. दरवाजा खोल। यार मेरे को वो दो बॉडी गार्ड है ना, उससे फाइट करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे बॉस दो यार, वो बॉस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हमको भी कोई दो यार फाइटिंग वाइटिंग करने के लिए, मजा आएगा फिर थोड़ा। दरवाजा खोल। अरे हो रहा। अच्छा लैग हो रहा है, नया वर्ल्ड लोड हो रहा है। फिक्स हो गया। प्रोसीड टू द लाइट हाउस, हो गया फिक्स। बट आगे जाने से पहले Major लास्ट बचा हुआ है क्यों? शुक का हो गया कैरेक्टर। अरे यार ये कर लेता। यूजिंग मेडिकल सप्लाई अलाउस यू टू फुल्ली रीजनरेट हेल्थ इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो इसके पहले क्या कर रहा था मैं? हाँ इंस्टॉल नहीं करना। Major मेरे पास एमो नहीं अभी, राइट ना मेरे पास एमो नहीं है भाई साहब। ये सब लोड मार रहा है। ओके ये वाला एमो नहीं है मेरे पास। ये वाला है, क्या एमो रख लेता हूँ। ये नहीं चाहिए। देखो बाकी का अब 1 2 3 4 इतना सब ठीक है। बाकी का इससे तो मेरा हेल्थ जल्दी इंक्रीज होगा, समझ गया। और अभी राइट नाउ अगर मैं अपग्रेड में चले जाऊं, पीछे जा गई। ओह रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डैमेज भी बढ़ जाएगा। कार्ट्रिज इसमें आओ क्या? बाकी थोड़ा पीछे आ जाते हैं।
इसको मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ? है चांस है। यार रिकॉइल का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा राइट ना, मेरे को रेट ऑफ फायर थोड़ा हाँ ये नहीं हो पाएगा अभी। यार मैं इसको डैमेज बढ़ा लेता भाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड कर लेंगे। एमओ फिलहाल ठीक ठाक है अपने पास, चलो आगे निकलते हैं। Comrade Major. Yeah. I must insist that you destroy the beta connectors. Why do you have a bug up your ass about those rings, Charles? You said you would make a decision about the rings when the time was right. The time is now. Did that crazy ass pump thing kill that whale? The dewdrop is the latest design in the field of biomechanics. To put it simply, it is a hydraulic pump. Isn't that what I just said? Watch out! Fucking Tin Man. अरे बस कर मैडम। भाई
मर क्यों नहीं रहा ये? Where's your fucking button? Well, well. भाई 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 ओ बे पागल हो गया ये तो। Just working perfectly fine right now. GPU temperatures are okay. आई होप कि अभी प्रॉपरली चले। आई होप। देखो लैपटॉप 2 बार क्रैश हुआ। मैंने क्या किया, लैपटॉप को ओपन किया, साफ लिटरली अभी साफ किया, ओपन कर लिटरली ओपन करके साफ किया अंदर से फैन वैन। आई होप कि अब चले। आई होप अगर अब ये नहीं चला ना तो फिर लेट्स सी अब एक्चुअल में कैसे चलता है देखते हैं भाई। फिंगर क्रॉस। आई होप कि प्रॉपरली चले। आई होप। क्योंकि जब मैंने लैपटॉप को स्टार्ट किया था ना, लैपटॉप मतलब ओबीएस स्टार्ट करते मेरा 83% पहले जा रहा था। आई मीन 83 टेम्परेचर डिग्री, 83 डिग्री वैसे ही जा रहा था। अब इट्स अराउंड 70 डिग्री मेंटेन कर रहा है। हाँ हाँ मतलब ऑब्वियसली लोडिंग हो रहा है तो फिर ठीक है, लोड भी जल्दी हो रहा है। आई होप ये फिक्स हो गया हो। बट अगर ये फिक्स नहीं हुआ, हेलो रॉकी रॉकी, हेलो हेलो हेलो, अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो फिर अनफॉर्चुनेटली गेम को आगे कंटिन्यू करना थोड़ा ना मुश्किल हो जाएगा।
बिकॉज लैपटॉप इज नॉट सपोर्टिंग उतना जितना। So, what will it be, Major? Weapons? देखते हैं सर कैसे जाता है। फिंगर क्रॉस भाई, अच्छे से चलने दे भाई प्लीज। दिस म्यूजिक ब्रो। यस ब्रो, एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड। ये मेरे को इतना नहीं चाहिए, इसको निकाल। ओके ये वो तो अभी हमको क्राफ्टिंग में एमो क्राफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज एमो का जरूरत पड़ रहा है। क्राफ्ट कर। ओ भाई मैं एमो भी क्राफ्ट नहीं कर सकता। कांट जनरेट इसका फोन नंबर क्यों मांग रहा है पता नहीं। आई मीन उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रखा है पर्पसली। मैं भी उसके लिए अपने एक बंदा था उसने सेट किया हुआ है, मतलब जितना स्पैम अकाउंट ना आए वो अच्छा है, इसके लिए रखा हुआ है ज़्यादा सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई यार, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि ओके कोई बात नहीं। गुड नाइट मॉक्स, गुड नाइट। पहले क्या हो रहा था कि स्पैम अकाउंट बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए थे, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। यार ये एमो नहीं चाहिए मेरे को इसका ये एमो काम आ जाएगा तो मैं ये ज़्यादा कैरी कर लूँगा ना। ओके देखो अब स्टोरेज में हमको बाकी का तो ठीक है बट ये नहीं चाहिए, ये इसमें चले जाएगा, ये इसमें जाते हैं एंड देन इतने में मेरा काम होना चाहिए। बट लेट्स से कि मेरा वैसे भी काम हो नहीं रहा है इसमें, और मुझे अपना अटैक बढ़ाना पड़ेगा जो ये मैं खा लूँगा। इसको 2 नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए, मेरा काम होगा। बोन विले खाई, नींद उड़ गई है लेकिन फोकस नहीं कर पाऊंगा कल ही में। ओके कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ससुरे सोते जाओ टाइमिंग पे, इसके लिए तो मैं तुमको बोलता हूँ सोना जरूरी है सर। बाकी यार ये एमो नहीं बना पा रहा मैं क्योंकि मेरे पास ये मटेरियल नहीं है। कोई बात नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे, बट इसको काम चलाने के लिए हमको इसमें अब काम था सुबह, कुछ तो जल्दी उठना पड़ा। गुड नाइट। फोन नंबर सिक्योरिटी फ्यूचर में रखोगे क्या? अब सबके लिए फोन नंबर सिक्योरिटी है। यस। Please select the desired procedure.
इसमें ये भी अपडेट नहीं होगा। मैं जैसे बताया कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा था यार, इसलिए मेरे को पर्पसली रखना पड़ रहा है, क्योंकि उससे स्पैम और अनवांटेड एक ये भी आ गया था कुछ, वो अपना कुछ तो लिंक शेयर कर रहा था, वो काइंड ऑफ वायरस तक के वेबसाइट पे जा रहा था, वो भी हो गया था एक बार। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं चला, लेकिन मेरे को पता चला, उसको रिमूव कर दिया। उस बंदे को कौन ना और कुछ नाम है क्या जिसने ये फोन नंबर से भेजा है? यस है ना। अच्छा बंदा है वो। ऑब्वियसली अगर मैं सच्चे बताऊँ तो मेरे को डिस्कॉर्ड का इतना पता नहीं, बट उसने काफ़ी हेल्प किया सेटअप करने में। सेटअप करने में क्या, मोस्टली उसने पूरा ही सेटअप किया, सिर्फ मैंने अकाउंट बनाया था। वो ये चीज़ें ही ध्यान रखता है, वो भी मॉड ही है। ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता कहाँ का है, बट मैं क्या कर रहा था भाई, मैं कुछ तो करने वाला था अभी। क्या कर रहा था इसमें, ये लगा के, हाँ ओके, इसको मैं फ्रीज लगा लेता हूँ। वायरस था क्या जो लिंक डाल रहा था? यस, वो भी हो गया। स्पैम कमेंट वाला आया था, एक डिस्कॉर्ड बूस्टर करके नाइट बोट में, डिस्कॉर्ड नाइट्रो का कुछ आया था, वो एक स्पैम लिंक था। ऐसा बहुत 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई थे 3-4 मंथ में। उसमें से स्पैम ईमेल लोगों को जाना स्टार्ट हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। अरे वो ज़्यादा तुम गेम एंजॉय करो रे। आई एम वेलकम टू स्ट्रीम। बाकी तो देखो ये हो गया अपना काम, बाकी हमको क्या करना है। देखो ये ज़्यादा भी वैसे यूज़ नहीं करने वाला है, इसमें ये लगा देता हूँ, ठीक है। और ये तो है ही, सब में लगा हुआ है। ओके, इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं लगा के इसमें। आई थिंक वी आर रेडी राइट नाउ। ओके, लेट्स गो। Comrade Major. Yeah. I must insist that you destroy the beta connectors. Why do you have a bug up your ass about those rings? Why do you... यहाँ पे हम अटक चुके थे। Yes, did that crazy ass pump thing kill that whale? The dewdrop is the latest design in the field of biomechanics. To put it simply, it is a hydraulic pump. Isn't that what I just said? रुको,
क्यों नहीं रहा है? इसको क्या होगा? यू नो व्हाट, मैं ये गन से मार के ट्राई करता हूँ। भाई ये गन बढ़िया है भाई, एकदम से बढ़िया मार पा रहा हूँ मैं। हो जा। भूतनी के भाई मेरे को भी मार दिया क्या? नहीं ओ भाई साहब, नाइस वन। कल बेटे कल आइयो। भाई शॉटगन तो कुछ काम ही नहीं है। शॉटगन तो बकवास है भाई। ये बहुत काम है। अगर इसका और एम होता तो और इजीली मार पाता है इसको। यहां से ऊपर निकलना है। Jump. Nice one. Okay. Right side. Proceed to the lighthouse. Wow. Wow game. Wow. Wow game. Wow. पकड़ क्यों नहीं रहा है? हेलो क्या हो गया? पकड़ने में क्या इशू है? भाई वो पकड़ लिया। नाइस वन। Whoa, that thing was dangerous. I didn't know if I could handle it. And there are much more powerful robots out there. Real combat robots are far deadlier. There aren't any combat bots here. Not yet, but once Collective launches, they will be everywhere. And 2 of them will be equipped with beta connectors.
Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You and the rings are driving me nuts. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? You can listen. Done. Happy now? Good decision, Comrade Major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's इसने hope क्या so. निकाला by the way? समझ में नहीं आया. What? Hello? अरे यहाँ पे नीचे कुछ तो है. साइड में चलो, साइड में चलो. लास्ट तक चलना है, लास्ट तक. नाइस वन. अरे बेटर है कि मैं पूरा हिल मार लूँ. लेट्स गो. ओ भाई. Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat mode has been disabled, and the robots have returned to their normal status. Well done, my boy. Oh, Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? Come back to Chalamet, get a checkup, and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. So हम लोग. You didn't tell Sechenov about Philanthropa. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Dr. Sechenov isn't going to like it. अरे हम लोग ने कॉम्पैक्ट मोड डिसेबल कर दिया. लेट्स गो. अब मजा आएगा ना वीडियो. बट उसके पहले हमको एक चीज करना है इसमें. ओके. इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइंड अ व्हाट. ओके, चल रहा है. बट इसको हम बंद कर देते हैं ताकि इसको भी बंद मारते हैं. बंद हो जा भाई तू भी. थैंक यू. जितना कम हो सके उतना कम बैकग्राउंड में चीज़ें चलाने का ट्राई कर रहे हैं और कुछ नहीं. यार ऊपर कैसे जाओ अब? ओके. Think we should head upstairs? नहीं हमको तो जाना नहीं ना ऊपर. तुम अकेले जा रहे हो. ठीक है, समझ रहा हूँ. इसके पहले हमको एक और चीज. वही तो बोलू. मेरी A lighthouse, huh? So where is she? Saving data. Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? I do not detect anyone in the vicinity. Let's take a look around. She's gotta be here. Do you trust Dr. Filatova? I don't trust anyone. But Acha. she's got something important to tell me. And I'm sure Dr. Sechenov is hiding something. Has Dr. Sechenov ever told you about his plans? Not really.
I mean, he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock and the boss didn't even bat an eye. Is the launch of Collective really so important he can't even delay it out of respect for the dead? I have no data on this topic, Comrade Major. No data, huh? Well, I don't have any data either. So let's go get some. ओ भाई डायरेक्ट घर के अंदर लेट्स गो डेटा ढूंढना है नाइस वन और क्या है घर में तेरे अरे यहाँ पे बाहर कुछ तो रखा हुआ है ओके ओ भाई साहब नाइस वन एमो ही एमो मिल गया लेट्स गो और हमको जाना है नीचे बट हम पहले जाएंगे ऊपर क्यों बिकॉज हमको चाहिए लूट भाई नया रेसिपी मिला हमको लेट्स गो और ऊपर और कुछ है क्या नहीं है चलो अभी हमको नीचे जाना था नीचे जाते हैं नहीं यार इसके और नीचे जाना है ना ओके What do we have here? A chair and a TV? This isn't what I was expecting. What were you expecting? I suspect that this room has a specific function. मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है भाई सच्ची बताऊं तो कार्टून दिखाएंगे बेटा क्या हेलो हाँ मैप पे आप रखा है भाई बट बिफोर गोइंग I need to do one more thing यहाँ पे जो कि है इसको ओपन करके कागा 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 चल 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 जल्दी 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 ओके हाँ 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 दिखा कार्टून देखा नहीं लोग ओ भाई ये तो ओ I believe that the unscheduled acceleration was caused by the elevator access system being hacked. Otherwise, Dr. Filatova would not have been able to initiate it. So she hacked the system. Kind of like how all these poor bastards got hacked to bits. So that's Neptune, huh? Looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. I wouldn't mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to China. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. I'm sick of playing cat and mouse with her.
What are we बोलो doing मैडम। here? What do you want? Just hear me out, P3. बचा बता। Let me try to give you a different perspective, and then you अच्छा। can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds. They won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too. But that's not how things really are. Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. मतलब हम लोग I got a question. I've got questions. Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, But analytics इसने center, बोला and सबको primary कंट्रोल archive. करेंगे in the The sense मतलब activities हम of all भी the other kind of complexes are studied adapt here किया in वो चीज order को to तो draw हमको भी कंट्रोल conclusions करेंगे and generate probability दूसरे matrices. वो slave बनाएंगे हमको The Academy has a number of interesting departments. For example, there's the Radio of the Future. By mathematically combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. But there's another very special department here called Polymerized Subject Behavioral Psychology. They're supposed to be volunteers, but... But क्या? Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any funny business at all and I'll kill you. This is your last warning. Sure, fine. Come on, I won't waste your time. Okay, lead Okay. on. चलो गेम सेव अरे पहले आप मैडम पहले आप ओके मैडम नहीं आ रही है मेरे को क्यों लग रहा है मेरे को फंसा देगी अंदर डोर मत बंद कर पीछे से तू भी आ जा साथ में Well, are you ready? Yes. Disable polarization. Oh, fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it Limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying. Whatever. Line them up. Oh, bhai. Keep going. The fat guy. Tell him to jump. He could use Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. Goddamn you, jump! Oh my god. This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? No.
We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behaviors, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. We gotta stop this. Stop this. That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot! The Boss would never do that. He would, and he will. On Monday. अबे भाई. All this is really hard to swallow. But I'll help you. Whatever you're planning, I'm in. कैसे लेकिन? You're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me? Yeah. I want to hear what he's got to say. क्या ही बोलेगा वो? P1, P2, P3. Your mind is never free. So इसको वो जो इल्यूजन हो रहे थे वो भी उसी का पार्ट है क्या? मतलब इसको भी कंट्रोल करने देख रहे थे. A man can be repaired. What? What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. भाई इसके साथ भी हो रहा है वही चीज़ है. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. If you worked here, then why didn't you try to stop this? I thought it was for the best. I thought it was for the good of the entire Soviet Union. But when I realized what was really going on, I had to bide my time, wait for the right moment. Victor and I risked everything and you know the rest. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. ओ भाई साहब. Hey, Major. I'm fine. My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, Sergeant. You won't even remember a thing. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Fine. I just don't feel comfortable around these people. Huh, well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. Then you'll see all people stripped of their free will. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster! Affirmative. Listen, about Victor, What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. अबे कहाँ है का व्यू भाई? चलो आगे. निकलो यहाँ से मैडम. भाई बड़ा ट्रिकी जगह है भाई.
यार फिर इसको इल्यूजन हो रहा है। Resist, my darling. Resist. Ah, fuck. I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Does your perception of the world change? Yeah, exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't know. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Vossod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. It doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Vossod polymer extension? The Vossod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles, why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is ये true, भी नहीं बता रही, वो भी नहीं बता रही है। ओए वो वायरस का क्या नाम था जो लिंक डाल रहा था, नाम याद है क्या? मेरा कमेंट ऊपर है, नहीं पता है, मेरे बहुत पहले का बात है, अराउंड 3 to 4 months, maybe 6 months, याद नहीं है, बट बहुत पहले की बात है। There will be records about you. भाई उसका AI भी नहीं बता रहा, दिमाग वाला चार्ल्स। State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Cheriton Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Oh bhai. Charles, are you there? भाई चार्ल्स भी नहीं बता रहा है। Nothing. So, what is Charles then? Long story short, your Charles is Professor Cheriton Zaharov. Huh, that was short. So how could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the module. The one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now. When he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. एक मिनट, मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में? एक मिनट, लेट मी लिसन, मेरा साउंड कैसे आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, मौज कर दी, हेलो। भाई आ तो रहा है क्लियर, क्या बोल रहे हो सर? बट आपके लिए हम 1 मिनट। ओके चलो, कर दिया, एक बार मैंने रिस्टार्ट कर दिया। आपका वो थोड़ा गिज लग रहा है, मैंने क्या लास्ट में वायरस का नाम याद है? नहीं याद है सर, जो वायरस था वो याद नहीं है, क्योंकि अराउंड 3 से 6 महीने पहले की बात है ये। तो मेरे को पता चल गया
थोड़ा फिशी वेबसाइट है तो मैंने डिलीट मार दिया तभी का तभी। आई नो ये चीज़ें कैसे चलती है, इसके लिए हम सतर्क हो गए। सतर्क रहे, सावधान रहे, इंडिया फाइट्स बैक। चलिए। So Charles isn't a person anymore, just a device. I don't know, I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. अच्छा। So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. हाँ, ये तो What's notice funny कर is लिया। that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. How can you talk about this so calmly? To me, वही तो भाई Chariton इतना सब कर लिया, Radyanovich इसलिए died a इसको long कैसे time पता? ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. ओ भाई मतलब इसके पास huh? एक्सेस है। So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Let's go. भाई लेकिन मेरे को अभी तक नहीं समझ आया, इसने खुद को अब इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, मतलब इसका जो भी ब्रेन का जो भी डेटा था सब इसके अंदर इम्प्लांट किया है, तो एज अ एआई इससे बात कर रहा है, ऐसे लग रहा है। Welcome, Chariton Zaharov. What is the subject of your query today? Agent P3, personal file. Your search returned 42 audio records. So, which one do you want first? I couldn't care less. Then pick one at random. कहाँ पे है? जंप नहीं मार रहा क्या? नहीं मार रहा है यहाँ पे। ओके, ये साइड तो मैंने वैसे भी क्लियर कर लिया। ऊपर चेक कर लेता, ऊपर कुछ तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत काम का चीज मिला बाय द वे। गुड नाइट, गुड नाइट। लाइक करके जाना सर। किया होगा तो नो प्रॉब्लम। Okay. I only need one for now. Try this one. Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. इसके ऊपर भी किया था, अभी इसमें पता चलेगा। They were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. तू मजे ले ले नाइट बोर्ड उसके। Find another recording. Another recording.
Okay, play this one. Commencing Babina. playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. अच्छा. In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go पार्ट get से another हेडशॉट recording. मारूंगा. Okay. Bring Aritha a different record. Here's another one. Let's give this one a spin. Procedure. Implant the Voskhod neuropolymer brain function extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient, Major Sergei Nechayev. Codename, कभी ना सब्सक्राइब भी कर दिया. गुड नाइट. अरे वो नाइट वॉट मजे लेता हूँ पर्पसली डाला हुआ. गुड नाइट. Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married. With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the Major into combat mode on command. I'd like to add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise with a push of a button. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? The boss would never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. ओ भाई, ये भी बात सही है. जाओ उसको जाके पूछ. आई थिंक वही है जो एक्सपेरिमेंट किया था वही बैठा है. He's waiting for us at Chelomey. If we want to stop Sechenov, we'll have to string him along. So you bring me there as your captive, and then what?
We will destroy them. And then we play it by ear. Oh my. So that's how it is, Major. Think it over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zahara. There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and then... Yeah, well... I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends. So that's how it is, Major. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you.
First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov gonna keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet and made significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts? Okay. Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. The boss... ओ भाई वो बेले ट्विंस है ना जो इसके बॉस के साथ एज अ गार्ड घूम रही है, उसकी वाइफ है. Boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. This is... Holy shit. Fuck me, this can't be a... We've got a ride, Major. We can get out of here. वाह भाई. Do the academy, okay? Can we go, Major? Okay, let's go. भाई यार तो दुनिया घूम गई. तो उसके सारे थॉट्स वो पहले. I'm really sorry you had to go through all this. भाई. Shit. Oh, here we go again. No, not now. Not here. अबे. We are all monsters in the dark, my boy. How many times have we talked about this? Each book from my father's library was nothing but a fragment of the knowledge I sought. I've spent my entire life putting those fragments back together, juxtaposing each scientific fact. And once I'd completed the puzzle, I found a book that now prevents me from sharing my knowledge. That book is Human Greed and Human Evil. People have no time
themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. Down this side, they're playing with the power of the masses. Science, shattered to pieces by the husks of books no one has ever read. None of the social systems that exist now allow humanity to fully evolve. They are all. भाई ये जो हम लोग ऐसे इल्यूशन में जा रहे हैं, इसका ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है सारी चीजें। भाई कितना दिमाग के साथ खेला है इसके भाई साहब। Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity. ये दादी जी को बहुत कुछ मालूम होगा। You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. Where? You tell me. How am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, you do nothing but sulk and fly off the handle at the drop of a hat. Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Disgraceful. What's your daughter got to do with me? My Katinka. Our Katinka. They played hell with your memory, अबे Sonny. इसकी daughter इसकी wife थी क्या? What are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. Oh, भाई इसकी mother-in-law ये। Until those Bulgarian और भाई उसकी बीवी थी वो। Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. She's everywhere, मतलब? Fuck. You got a gun, lady. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything'll do. I just need to blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady. Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. करते हैं कुछ इंतजाम करते हैं। What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton? You devil! You're alive! In a sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergei. Sechenov has to die! Jeez, get off my back already! Crispy critters! What the hell is going on around here? On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. भाई इसके लाइफ में कुछ ज्यादा ही एडवेंचर नहीं है।
I'm not laying a finger on Sechenov. I'm out. I've had enough of this game. What the hell are you? Are you some scared little bitch? You're making a mistake, Major! Head to Charlemagne now! If you're so worried about your righteous vengeance, you can go there yourselves. अरे 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 कुछ तो हक दिया मैंने, कुछ तो हक दिया. वहां पे ऑप्शन था एक. इसका एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, जाना था वहां पे. ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा गाने. मेरे को लगा लोड ही नहीं होगा. वाह. Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity, and the red alert will Finally be back lifted with us, very Sonny. soon. You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. Where? You tell me. How am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, you do nothing but sulk and fly off the handle at the drop of a hat. Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Disgraceful. What's your daughter got to do with me? My Katinka. Our Katinka. They played hell with your memory, Sonny. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. Fuck. You got a gun, lady? Does it look like I don't have one? What would you like? Anything'll do. I just need to blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady! Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. Fine, I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. Okay. तो मुझे गेम ऑप्शन भी दे रहा है मारना है कि नहीं मारना है. Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton? You devil! You're alive! In a sense. An evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me.
I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. तो इसकी वाइफ वो बेला एज अ गार्ड है ना, वो तो उसके रूप में जिंदा है, बट वो भी काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव वे में जिंदा है. I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. Whatever, lady. Why don't you show me what's in that arsenal of yours? Sonny. Nice. Saving data. जाने से पहले I am extremely worried about you. I think you may be in danger. What do you mean? The break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you. Take it off before it's too late. And we'll be together till death do us part. Oh, man. I'm sick of you going on about the glove. But I'm right, darling. Yeah, you just want to murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only kill pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling, take off the disgusting thing right now. Listen, can you spare me your maniacal ramblings? This place has already gone to hell. Whatever you say, Master. Just enter me often and keep punishing me. बढ़िया भाई. और भाई हेल्थ किट नहीं है मेरे पास. ये 3 लेके क्या करूँ? 3 का जरूरत भी नहीं लग रहा. यार ये छोटे छोटे लेने से अच्छा मैं बड़े बड़े वाले लेता हूँ भाई. ये हेल्थ बढ़ाने में काम तो आ रहे. ये इतने नहीं चाहिए मेरे को. ये वैसे भी यूज नहीं वाले हैं इतने. बस मेरे को एमो कम नहीं पड़ना चाहिए, कितना भी हो जाए. बाकी का और क्या है? ये लगने वाला है क्या? बस चलो इतना हो गया. बाकी का अच्छे हेल्थ किट ले लिया मैंने बाय द वे. Saving data. $310 ammo, let's go. Saving data.
और कुछ अपग्रेड कर सकता हो क्या भाई? क्योंकि बिकॉज हमारा गेम खत्म होने आ रहा है लिटरली। ये एमओ में इतना यूज करने वाला है क्या? मेरे को नहीं लग रहा यार, बट कोई बात नहीं। लास्ट टाइम सेव करके निकलते हैं बस। हेलो दादी जी, आई मीन मदर इन लॉ। Then come on, Sergey. Vengeance awaits. Don't rush me. One thing at a time. Let's go. I would prefer that we reach Sechenov before Collective is updated and it is too late to change anything, in case you don't like his answers. Let's go. Oh. Hello. Be careful, Major. The twin energy. Just like you, a twin has the ability to store up energy in order to enhance its attack. Attack it takes out the store in the morning. Is that left or right? Nah, same difference. You have no idea how right you are. The twin is using everything she has to kill you. Use everything you have. Imagine if there were two of them. अबे एक से नहीं हो पा रहा। The latest robotics technology, and for what? To kill? How disgraceful. Stay alert. Riot it. What are you looking at, Major? Fight! Don't give up, Major. We need to get upstairs. ओ भाई ये बढ़िया भाई।
भाई इतने बार क्रैश हुआ यार। ओ भाई Be careful, Major. Is that left or right? Same difference. You have no idea how right you are. just like the tools has a way to store up energy in order to manage it. What are you looking at, Major? Fight! Robotics technology, and for what? To kill. How disgraceful. Stay alert. This lady has no desire to dance with you. Everything she has to kill you. Use everything you have. Imagine if there were two of them. Don't give up, Major. We need to get upstairs.
ओ भाई ओ भाई साहब ये तो ऊपर चली गई Atomic Heart Project, approved by the Secret Congress of the CPSU Central Committee on February 14, 1951. ओ भाई The साहब goal is the suppression of the United States of America, change of political regime, abolition of capitalism, establishment of communism, establishing social and moral ideals consistent with the beliefs of a Soviet person. The method of execution is the seizure of the strategic and military facilities, followed by disconnection and shutdown of nuclear power plants. Effective deactivation of the atomic heart of America, complete surrender of the government, and the transfer of power to the top leadership of the USSR. So how are they gonna pull that off? Well, Sergei, first they sell robots, then they simply give them away as aid. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. ओ भाई बड़ा क्रूशल एरिया है ये भाई से वो मारना बनता है भाई Please select the desired procedure. अपडेट करना बनता है यहाँ पे मेरे को क्यों लगा शॉटगन एमो कम पड़ने वाला है Authorization. Make.
What will it be, Major? राइट नाउ मेरे को लग रहा है इस चीज़ की ज़रूरत लगेगी और मे बी फायर वाले के Authorization, Major. Saving data. Boss? Protect. Well, Cheriton, are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, I wouldn't have expected you to be quite so gullible, my boy. Silence! You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the fuck do you think you are? Sergei. I can see you're terribly upset. It's okay, I don't blame you. But you, Cheriton, you were supposed to help the boy, not pull his strings like a puppet. Me? Don't you blame this on me? I'm not the one trying to deprive everyone of their free will, turning them into mindless puppets. It wasn't my choice to be a talking pile of goo either. You're glad it happened, aren't you? You'll use everything and everyone to achieve your goal, including me and your agent. Admit it! How dare you? I lost you both, then saved your lives. You're both scientific miracles. You are my best friend, Cheriton. And the Major is like a son to me. And those two are like daughters, right? And everyone you're going to connect to Collective, everyone whose minds you're going to control, who are they to you? Millions of foster kids? Everyone is just grist for your mill, Dimitri. I want to give mankind a spectacular future. Unimaginable achievements. I want to give them a path to the star. Both of you, shut up! Get your hands up! Some goddamn wizard you are. Tell him to stand down. I'm counting to 3. 1! What a shame. 2! It's a shame you've escalated this situation without even trying to resolve it peacefully. But I won't let you stand in the way of progress. Right, left, terminate.
ओ भाई What in the actual living fuck is this? Stop blaming the machines, Major. Freaking fucking critters. These are cold hard facts, Bulliet. Exactly what I want to correct. You just walk into my office with a loaded gun. Where's the friendship? Where's the respect? What about your respect, Dimitri? For everyone. Once I launch Collective 2.0, the world will be free of pain, suffering, and petty aggression like yours, D3. Classic. So to make everybody happy, we just need to kill all the unhappy people. Right, Dr. Sechenov? Stop messing with my head. So one of these robots is Ekaterina Nechaeva, the wife I don't remember? Well, which one? They both are. I tried to bring Vesna back to life when her brain was literally ripped in half. I wanted to restore her right and left hemispheres, but the process was too complicated. What the shit? But why? You're already fucking with people who are still alive. Couldn't you just leave the dead in peace? Which of my other memories have you wiped, boss? And how many times? You couldn't accept her death, and I'll save her. I had to do it, or your life would have been a living nightmare. That's enough, boss. I'm willing to believe that you were acting in my best interests. But why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure what to do. Right now, the right thing is to call out the twins and just talk to me. Forgive me, but right now they're fighting Sheridan, not you. Crispy critters! Can we just stop fighting? Get rid of Sheridan. Take off the glove. Okay, fine. First call out. We can do this. Don't listen to him. Wake up, P3. Sheridan has been brainwashing you from the very beginning. Wake up. Wake up, Sergei. What the fuck? All of them. Gotcha. Major, wait. Is due. Sechenov took her from... Surrender, P3, and give me Sheridan before anyone else gets hurt. Dimitri is suggesting that I'll be hurt. You will be next, Major. Finally.
these robots is Ekaterina Nechaeva, the wife I don't remember? Well, which one? They both are. I tried to bring Lesna back to life when her brain was literally ripped in half. I wanted to restore her right and left hemispheres, but the process was too complicated. What the shit? But why? You're already fucking with people who are still alive. Couldn't you just leave the dead in peace? Which of my other memories have you wiped, boss? And how many times? You couldn't accept her death, and I couldn't save her. I had to do it, or your life would have been a living nightmare. What else could I have done? You almost died in that explosion in Bulgaria. Oh, of course. Such valuable personnel. What a convenient... Shut up, Cheriton! That's enough, boss. I'm willing to believe that you were acting in my best interests. But why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure... Right now, the right thing is to call off the twins and just talk to me. Forgive me, but right now they're fighting Cheriton, not you. Crispy critters! Can we just stop fighting? Get rid of Cheriton! Take off the glove! Okay, fine! First call off! My... We can do this. Don't listen to him. Wake up! Major, wait. Katya. Your wife is dead. Sechenov took her from you. Surrender, P3, and give me Cheriton before anyone else gets hurt. Dimitri is suggesting that I'll be hurt. You will be next, Major. Finally. Will you really kill your own wife, Sergei? प्लीज मत हो
भाई। You lousy you piece don't of understand. shit. Sheridan's manipulating you. He gained access to the Voskhod module in your brain and started sending you to limbo. I was busy getting ready for the collective update, so I didn't realize it right away. He's the one who killed Molotov. Tell me, Sheridan, did you do the same thing to Dr. Filatova? Did you use my agent to tear her limb from limb? I'm sick of your hypocrisy, Dmitri. I did your dirty work while you stayed squeaky clean. But they didn't deserve to die. Why have you done this? You motherfucker, this whole time. I've had quite enough of you, Major. Your job is done. ओ भाई। P3, my boy. Get up! Get up! What do you want? I want all this to end, Dmitri. I want your pathetic human race to realize it has no future. It's time for it to step aside and make way for the next phase of its evolution. Me. Sheridan, you're pure evil. What are you going to do to humanity and collective? You should not call something evil just because you cannot comprehend it. Evil is an abstract concept, and your thinking is limited. You are a human, a species that will soon be extinct. I realized when I stopped being human myself. Your limitations prevent you from seeing the truth. Dumb humans don't want to evolve. All they want is comfort and satisfaction on someone else's dime. You never wanted to join with the massive array. No. Stop, Sheridan. No. I changed my mind. ओ भाई ये सबसे कनेक्ट करने को दिखेगा। Literally every human. Huh? The Argentum unit entered Dr. Sechenov's office and found no trace of the doctor. According to partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. Sechenov's body and then completely consumed it. After the events described in the report, the unidentified humanoid neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and vanished. Oh, bhai.
wispy critters! उसकी वाइफ बोल रही थी ये सारी चीजें. There is nothing I can do if you leave me here to cry. बढ़िया भाई. There is nothing I can do. If you leave me here to cry. You know my love will follow you, baby. As the years go passing by. What if मैं अगर सेकंड ऑप्शन लेता तो क्या होता? But there's one thing you can't deny. मैं वो सोच रहा था मैं सेकंड ऑप्शन ले तो क्या ही है. मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ राइट नाउ. बस इतना ही है कुछ नहीं बोलना.
and that's the atomic heart for you guys. I hope अगर किसी ने बाद में देखा तो मजा आया कि नहीं बताना, and make sure to subscribe. You know, सब्सक्राइब करने से चैनल को रीच मिलती है, दूसरे का ऐसे ऐसे करते जाएंगे. काफ़ी अच्छा लगा, खेल के भी अच्छा लगा, बढ़िया गेम था भाई. द वे आई एक्चुअली एंजॉयड. बहुत बढ़िया गेम था यार. एक्चुअली फेल्ड के मैं कुछ खेला है इतने दिनों के बाद. फील तो है गेम में, अच्छी फील है. ओ भाई चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट. दिस इज MGBGAMi. मिलते हैं कल विथ अनदर न्यू गेम. गुड नाइट गाइस. जो भी था अच्छा था. निकलता हूँ मैं बाबा. एंड दिस इज हार्ट. मेक श्योर टू लाइक तो करना बनता है ये वाला.